राइजोबियम। हाँ जी बेटा बोल। राइबोसोम। साइटोप्लाज्म। इट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो ये पर्पल वाली चीज है, सारी डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, दिस इज साइटोप्लाज्म. Yes, there is one boy in the last. I think boy is there or girl is there in the last middle row, last bench, middle row जिसका हाथ खड़ा है. आ जाओ आ जाओ जल्दी से, कम कम कम, भाग करो भाग कर. रोल नंबर 3 आप बैठो बेटा, आप बैठो. The girl is coming. Let her tell. Ma'am, yes. What is this green structure? Cytoplasm. Yes. Rhizobium. हाँ बोलो. Rhizobium. Rhizobium. नहीं आप बस एकदम क्वाइट. दैट गर्ल इन द येलो शर्ट इन द सेम क्लास, यू कम. मिडल रो में जिसका हाथ खड़ा है, आ जाओ जल्दी से. कम, आप यहीं पे खड़े रहना, ध्यान से सुनना बेटा, सुनो ध्यान. Ribosome. राइबोसोम कहाँ से आ गया? What is this structure? ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये जो मैंने रेड में ये इस तरह से ये बना हुआ है. बैठो वहां, बैठो, बैठ जाओ. कहाँ से राइबोसोम पे कंफ्यूज हो रहे हो? यस. और बिंदु, स्विच ऑन योर माइक. और बिंदु, अपना माइक ऑन कीजिए. एंड रोल नंबर 5 माइक पे आइए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Very good. This is endoplasmic reticulum. देखो बेटा. रोल नंबर 11. रोल नंबर 11. बातें आ जाओ बेटा. मुझे आपने बताना है ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ. Yes, let me. बात करेंगे और बिंदु जब एकदम क्वाइट हो गया, नहीं तो भाई हाँ जी. रोल नंबर 11 बेटा, ये स्ट्रक्चर कौन से है बच्चे? Rough endoplasmic reticulum. Ma'am, rough endoplasmic reticulum. नहीं बेटा. दो टाइप की एंडोप्लाज्म. इधर देखो एवरीबॉडी. ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि हमें ये स्मूथ नहीं ना नजर आ रही, ऊपर इसके राइबोसोम्स अटैच्ड है, इसलिए है ये RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुलम तो ऐसे ही है. और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे राइबोसोम्स नहीं है. राइट. नाउ Alessandro beta, switch on the mic. And roll number 15, come near mic.
एलेजेंड्रो माइक ऑन कीजिए, रोल नंबर 15 आ जाएंगे। बना लो ये वाले जो मैं इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ, ये बनाओ। ये है SCR, ये है RER। S मतलब स्मूथ, R मीन्स रफ। हाँ जी एलेजेंड्रो जरा बोलो हेलो। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नो नो सर, इनका माइक देखेंगे प्लीज। कंफ्यूजियस कंफ्यूजियस बेटा अपना माइक ऑन कीजिए, पहले माइक ऑन करो, देखिए आपकी आवाज आ रही है। एलेजेंड्रो बेटा अपने ध्यान से देखना, आपकी माइक नहीं आ रहा है तो आई विल आस्क समथिंग एल्स। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम। हमारे एक रोल नंबर 17 को भेज दीजिए प्लीज। रोल नंबर 17। 18 आ जाओ। 17 नहीं है तो 18 आ जाओ। Roll number 18 can come. Jabinder, come here. आ Answer जाओ। the question. Now, You're on the mic. tell me which Which is this structure बेटा? can you name In this structure? मिडिल रो में सेकंड बॉय ब्लू शर्ट, आप आ जाओ बेटा। हाँ सेकंड या थर्ड से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यू टेल। आओ जल्दी जाओ जल्दी। Golgi bodies. This is body. Absolutely correct. This is Golgi complex. Very good. बैठो बेटा, सेम क्लास में से यस somebody come voluntary। आ जाओ, इसके साथ वाला लड़का जो ब्लू शर्ट में लड़का था उसी के साथ आ वाला लड़का आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम नियर द माइक। ध्यान से, सबने ये स्ट्रक्चर बना लेने हैं, दोबारा से बना लेने हैं बेटा। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये देखो, ये मैं बना क्लोरोप्लास्ट। नहीं, ये देखो ध्यान से देखो। ये है। What is this structure? क्लोरोप्लास्ट। बेटा पहले ये देखो कि क्या यहाँ पे आपको सेल वॉल नजर आ रही है? क्या यहाँ पे सैप वैक्यूल है बीच में? अगर सैप वैक्यूल नहीं है तो ये तो प्लांट सेल है ही नहीं। Yes. सेम क्लास, लास्ट बेंच पे रेड शर्ट में बच्चा है बेटा, रेड शर्ट ब्लू टर्बन। जोर से यहीं से बोल, शायद आवाज आ जाए। Speak कर माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज, आपने ये किया ना? आप क्लोरोप्लास्ट कह रहे थे बेटा। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। बैठो बेटा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान देना, मैं अभी आपको प्लांट सेल एनिमल सेल कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ये बताती हूँ, ठीक है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगेन ध्यान से, जिसने लिखना है वो लिख लो। इधर ध्यान दो, सामने ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। एवरीबडी हियर। न्यूक्लियस, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, powerhouse of the cell. Endoplasmic reticulum, प्रोटीन एंड फैट फैक्ट्रीज। प्रोटीन्स भी बनाते हैं, फैट्स भी बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज, पैकेजिंग इंडस्ट्री, राइट? ये है बेटा, दीज आर लाइसोसोम्स। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लो दोबारा से। लाइसोसोम्स आर suicidal bags, right? Down. Lysosomes are called as suicidal bags. Suicidal bags because when they burst, अगर ये burst कर जाते हैं, they cause death of their own cell. When they burst, लिख ले बेटा, ऐसे करके मत बैठो, लिख लो। हम कोई मूवी थोड़ी देखने आए हुए हैं। We are not here to see War 2 और तारे जमीन पर, है ना? We are here
to have some knowledge. इसलिए लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो घर जाकर. So write down, lysosomes are called as suicidal bags because if they burst मतलब टूट गए अगर, if they burst, they cause the death of their own cell. ये सारा सेल मर जाएगा. ये होते क्यों है? Why they are present? अगर ये अपने सेल की डेथ कर दें, then why they are present? पहले लिख लो. They cause death of their own cell. But why are they present? They digest the foreign organisms entering in the cell. Write down. Function of lysosomes. They digest the. Decades, girls, लिख लो. Lysosomes का क्या function है? They digest the any foreign organisms entering inside the cell. और ये क्या चीज है? ये जो तुम्हें बहुत सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं, these are two centrioles, pair of centrioles, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सेंट्रोसोम जिसको कह देते हैं. They help in cell division. They help in cell division. ये देखिए, ये वाइट वाइट से स्ट्रक्चर्स, ये आपको नहीं तो मैं इस तरह बना देती हूँ. What are these? ये है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. These are protein factories of the cell. ठीक है जी. सो एक बार हम दोबारा से देखेंगे. Now see, how can you differentiate? कैसे पता चलेगा? एक बार जब आप देखते हो तो कैसे पता चलेगा कि कोई प्लांट सेल है या एनिमल सेल? तो सबसे पहले इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, एवरीबॉडी. सो व्हाट यू हैव टू सी दैट प्लांट सेल हैज सेंट्रल, या सेंट्रल ना सही, सेंट्रल लार्ज. ये सेंटर में नहीं है, चलो पेरिफेरी पे है, बट फिर भी सेंट्रल लार्ज सैक वैक्यूल. ठीक है. अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है, इट मीन्स इट इज ए प्लांट सेल. राइट. ये नहीं नजर आता तो इट मीन्स इट इज एन एनिमल. राइट. न्यूक्लियस देख रहे हो, दोनों में सेम है, कंट्रोलिंग सेंटर है, और दोनों में न्यूक्लियस इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ये इमेज, बट थोड़ी थोड़ी सी. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, राइबोसोम्स ये भी दोनों में है. राइट. डिफरेंस कहां पे है? यहां पे. ये है क्लोरोप्लास्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये और ये दोनों में है. क्या फर्क है? सेल वॉल सिर्फ इसमें है. लाइसोसोम्स इसमें है. सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल्स. ठीक है. हम दोबारा से एक बार और करते हैं. ठीक. तो so let's see. तो ऑर्गेनेलीज,
जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स है ऑर्गेनेलीज, सभी लिख लेना दोबारा से। फर्स्ट है न्यूक्लियस, सैप वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। इनको अब हम क्या कह सकते हैं? इधर देखो एवरीबडी हियर, ध्यान से इधर सुनना है, बस हमारे पास ज्यादा तो हमने काम करना ही नहीं। न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर। सैप वैक्यूल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। सेल में, प्लांट सेल में जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, they are stored in the sap vacuole and then they are thrown out. Endoplasmic reticulum synthesize fats and proteins. और भी बहुत काम है बट ये मेन है। पैकेजिंग इंडस्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ सेल, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्रीज, lysosomes, suicidal bags। ठीक है, आई होप आपको पता भी होगा, बट फिर भी आप ये लिख लोगे तो यू विल एबल टू रिटेन इट फॉर ए लॉन्गर टाइम। एंड देन डिकार्ड्स, बेटा माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। डिकार्ड्स, डिकार्ड्स माइक ऑन कीजिए। कोई ऑन करो एंड से समथिंग। हेलो, देखिए आपकी आवाज आ रही है, बोलो। हाँ आ रही है। नाउ आपकी लेफ्ट साइड में फर्स्ट बेंच पे जो रेड शर्ट में बॉय है वो आ जाओ आगे, अपनी वर्कशीट लेके आ जाओ। आ जाओ, वर्कशीट लेकर आओ, वर्कशीट लेके आइए और जल्दी से फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, फर्स्ट का कौन सा आंसर है? माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बोलो मेरे साथ ताकि आपको ये वर्ड्स अपने अपने से लगे। माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड बताइए, किचन ऑफ द सेल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन प्लांट सेल्स कौन सा है? सैप वैक्यूल। सुसाइडल बैग्स कहां पर है? लाइसोसोम। ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल कौन सा लास्ट रह गया? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बैठो बेटा, यहाँ पे एक और लिखा सिंथेसाइज फैट्स एंड प्रोटीन्स, और दूसरा है दीज आर ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन्स।
ठीक है जी। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, फिर हम बुलाते हैं। किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया, बटलर में से बुलाएंगे, बटलर में से बेटा। बी रेडी, डू क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। एलेजेंड्रो में से आवाज नहीं आ रही। एरिस्टोटल में से बुलाएंगे, बटलर एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। जल्दी से जल्दी से। नाउ अब एक और चीज यहाँ पे आपको काम भी आएगी, आपकी बुक में भी दी हुई है। प्लास्टिड्स ऑफ प्लांट सेल। These are of 3 types: leucoplast, chloroplast and chromoplast। बेटा स्ट्रक्चर सेम ही है, स्ट्रक्चर सबका, तीनों का सेम है। दिस इज प्लास्टिड, ठीक है। ये याद रखना, 2 मेम्ब्रेन्स है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, कोई कलर नहीं है इसका, स्टोर फूड। क्लोरोप्लास्ट, एवरीबडी हियर, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर है, it is green colored and it helps in photosynthesis। क्लोरोफिल होती है बेटा इसमें, it has chlorophyll। then chromoplast, किसी में रेड है, किसी में येलो है, डिफरेंटली कलर्ड एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को छोड़ के इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। give color to flowers, seeds and fruits। flowers, seeds and fruits, इनको कलर दे, ठीक है एवरीबडी। ये आपके बुक में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग। चलिए जी, अब आ जाइए, कौन आ रहा है, दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल में रोल नंबर 22। यस, रोल नंबर 22 एरिस्टोटल। बेटा माइक ऑन कीजिए फटाफट से। यस बेटा, इसका फर्स्ट बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी चॉइस आ जाएगी बेटा? पूरा सेंटेंस बताइए। जनरेट एनर्जी फॉर द सेल। बिल्कुल ठीक है, और एक दूसरा भी बता दो, क्रोमोप्लास्ट क्या है? गिव कलर टू फ्लावर्स। बिल्कुल ठीक है, गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आप बैठिए बेटा, आप बैठिए, माइक ऑन रहने दीजिए, माइक ऑन रहने दीजिए, आप बैठो। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 कम नियर माइक। 10 इज देयर, आ जाओ बेटा, माइक ऑन कीजिए। और इसके बाद 7 भी तैयार रहना, जल्दी से बेटा। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो।
डेनेट वाले आ गए हैं, वो कहते हैं एरिस्टोटल नहीं आ रहा, चलिए डेनेट में आ जाइए। डेनेट रोल नंबर 7, डेनेट रोल नंबर 7 कम। 7 वाले आ जाओ। डेनेट अपना माइक ऑन कर लो, ऑफ क्यों कर दिया, ऑन कीजिए। राइबोसोम्स का क्या आएगा बच्चे? राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। These are protein factories, बिल्कुल ठीक है। एक और बता दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलो इसका मैं बता देती हूँ। सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन्स तो बना रहे हैं बट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लास्ट वाला सिंथेसाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। हाँ जी, बटलर, बटलर में बेटा रोल नंबर 25, बटलर रोल नंबर 25 ऑन करो बेटा, माइक ऑन कीजिए। मैम बटर लाइसोसोम्स, फिफ्थ वाला लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग्स, डाइजेस्ट एंटीफॉरम सब्सटेंस। मैम सी ऑप्शन। यस इट इज सी, नहीं सी नहीं बेटा, डी। हाँ, ई ऑप्शन, डाइजेस्ट वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। अभी तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, लाइसोसोम्स आर डाइजेस्ट वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। हाँ जी, बटलर में ही, बटलर में ही बेटा रोल नंबर 19 बैठो बेटा आप, रोल नंबर 19 ऑन रखो, माइक ऑन रखो। रोल नंबर 19 जल्दी से आओ बच्चे, जल्दी से। क्रॉस द बैग्स, कम क्विकली। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, आप आ जाओ, आ जाओ, आई विल टेल। आ जाओ, आ जाओ। कहाँ बैठ गई द गर्ल? कम 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 कम। यस, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज को मैं बता देती हूँ। ए ऑप्शन ठीक कीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट द थिंग है, तो वो भी करेक्ट है बट ए ऑप्शन में कीजिए पैकेजिंग इंडस्ट्री। ठीक कर लो, पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो गोल्जी बॉडीज इज पैकेजिंग इंडस्ट्री। सैप वैक्यूल बताइए बेटा। हाँ जी, बटलर में बेटा माइक ऑन करो, सैप वैक्यूल। मैम वेस्ट डिस्पोजल। नहीं बेटा, सैप वैक्यूल है तो वेस्ट डिस्पोजल है, बट मैथ्स का पॉलिसी करेंगे तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, स्टोर सेल सैप, स्टोर सेल सैप। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का आ जाएगा एच, एक्सपेल एक्सेस वाटर। और बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सी ऑप्शन थोड़ी ठीक कीजिए, सिंथेसाइज फैट्स। डिटॉक्सिफिकेशन काट दो, सिंथेसाइज फैट्स कर लो। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, नेम द ऑर्गेनेली, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। दैट इज, यहाँ पे क्या आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन्स, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The organelle in plant cells which store organic acids, sugar, amino acids, store food, leucoplast। आंसर है इसका ल्यूकोप्लास्ट। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स, जल्दी से बताओ, एनीबडी जल्दी से, कौन बता रहा है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स एंटरिंग इन द सेल।
हाँ जी, कंफ्यूजियस में से बताएंगे, बट आपका माइक ही वर्किंग नहीं है ना? चलिए, अब मैं क्या कर सकती No, हूँ? madam, the mic is working. हाँ हाँ, आ गया आ गया। Karan, बोलो बेटा। Lysosomes. लाइसोसोम्स, बिल्कुल ठीक है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, सेम क्लास, जल्दी से बताइए। स्टोरेज एंड पैकेजिंग। answer the next question. Storage and packaging. Golgi bodies. Golgi bodies, very good. And site of respiration, respiration you know provides energy. बताइए, site of respiration, yes, जिसका हाथ खड़ा है, खड़े होके जोर से यहीं से ही बताओ। सेम क्लास, हाँ, जोर से। Speak loudly. Loudly. माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, जल्दी से नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन बताएगा? यस यस यस, एलेजेंड्रो। एलेजेंड्रो की आवाज नहीं मुझे आ रही है, प्लीज सी मैम की इनकी आवाज मुझे आए। और बिंदु, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4, वॉलंटरी कौन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई। जो यहाँ पे साइड में ऑर्गेनेली बनी है, मैंने कई बार आपको बना के दिखा दी है। यस, जल्दी से, हाँ, आके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, द गर्ल इज कमिंग, वेरी गुड। माइक ऑन कीजिए। Ma'am, it is Golgi body. वेरी गुड, गोल्जी बॉडीज। एंड लिस्ट 3 फंक्शन की जगह 1 फंक्शन कीजिए। गिव इट्स 1 फंक्शन, दैट इज It is for पैकेजिंग इंडस्ट्री। इट पैकेजेस, लिख लो यहाँ पे फंक्शन, इट पैकेजेस प्रोटीन्स synthesized by endoplasmic reticulum. Write down, it packages protein synthesized by endoplasmic reticulum. चलिए, और बिंदु में से somebody again comes. अब अपने अपनी क्लास का माइक ऑन करके जल्दी से एमसीक्यूज बताओ, जो पहले आके बताता है। लेट्स सी। Descartes, someone come. The structure or part which is common in all the living cells. सभी, चाहे वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट, सभी में जो है कॉमनली। यस, टेल मी। Descartes, मैम। हाँ जी, बोलिए। Plasma membrane. Yes, plasma membrane is absolutely correct. यहाँ पे लिखो, plasma membrane is present in all prokaryote and eukaryotic cell. Very good, very good. Why lysosomes are called as suicidal valve? जल्दी से, जो आ रहा है फटाफट से माइक ऑन करके बताओ। जल्दी से, एक एक बच्चा है कोई सी क्लास में, कम एंड टेल। जो माइक जल्दी ऑन कर देगा वो बताएगा आंसर। यस, कम कम कम, कंफ्यूजियस में से आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ जल्दी से। कोई बच्चा पहले माइक तो ऑन करते, वो पीछे से आ रहा है बेचारा, इतना स्ट्रगल करके आएगा। बताओ। Ma'am, B option. B option, because they contain enzymes that digest the cell's own components, leading to death. Very good, very good. Why are cell walls present in the plant cells? Why are cell walls present in the? Ma'am, A option. नहीं, they control what enter, बेटा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। सेल वॉल रिजिडिटी देता है प्लांट सेल को। बी ऑप्शन है, दे। Ma'am, B option. हाँ, बी बॉम्बे। Yes, assertion reason, assertion reason. The Golgi apparatus is responsible for packaging and transporting proteins within the cell. अच्छा, ये जो कहता है ट्रू है, raise your hands. Who say it is true? Descartes में कुछ है? Yes, it's true. काफी बच्चों ने अलेजेंड्रो वाले सोए हुए हैं, ये कुछ नहीं बता रहे। It is true. Golgi apparatus is responsible for packaging of proteins. Golgi apparatus receive proteins, modifies them. ये भी ठीक है बेटा, Golgi bodies receive proteins, modifies them. Option A. Option A. The nucleus is often referred to as the control center of the cell. बिल्कुल ठीक है, true. Nucleus contains DNA that regulates cellular activities. Option ये भी A है। क्यों कंट्रोल सेंटर कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर डीएनए है जो बाकी सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और लास्ट पॉइंट, ऑल्दो इंग्लिश वाले मैम आ गए हैं, बट एक पॉइंट में जल्दी से, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज प्लांट सेल और एनिमल सेल?
जल्दी से मुझे बताना है आपने कि ये कौन सा सेल है और हमने इसको प्लांट या एनिमल सेल क्यों कहा। मैंने सारा नहीं बनाया, इसी को ही देख के तुम कैसे बताओगे कि दिस इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। यस, टेल मी हु विल टेल। सिर्फ कंफ्यूजियस से हाथ खड़े और बताइए बेटा। यस, और बिंदु में आ रहा है कोई? बटलर। यस, कंफ्यूजियस बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बताओ। डेनेट में भी है वैसे। डेनेट, आप आ जाओ। डेनेट में स्टूडेंट लास्ट में, बॉयज के हाथ खड़े, आ जाओ बॉयज और गर्ल्स, समबडी कम। जल्दी से आओ, जल्दी से, क्विक। विच इज दिस सेल? मैम प्लांट सेल। Why it is plant? सेल, वेरी गुड। क्यों आपने इसको plant cell क्यों कहा? Because इट है सेल वॉल। cell wall, ये तो पीछे से आपके फ्रेंड्स ने बता दिया। दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर में दिख रहा है सैप वैक्यूल। ठीक है, तो it is प्लांट सेल, क्या रिकॉग्निशन है इसकी? दैट इज सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल। और आप क्या देखेंगे? अनदर इज, बाकी सब स्ट्रक्चर्स तो है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और अगर एनिमल सेल देखेंगे तो ये ओवल सा सेल होता है, स्क्वायर नहीं है। सेंटर में न्यूक्लियस है। देन देयर आर सेंट्रियोल्स एंड लाइसोसोम्स। ठीक है, ये फर्क है। नो सेल वॉल, lysosomes present, centrioles present, no vacuole, no chloroplast। ये बना लो, आपको recognition में easy होगा। This is animal cell, बाकी सब चीजें कॉमन। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है, अगली बार हम जल्दी से फटाफट 2 मिनट में आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में बताएंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू बेटा, ओके, बाय बाय। Okay, so if you have finished this, I will clear the board. And today we are going to do determinants. So who will tell me what are determinants? Anyone who already knows about them? Because I'm sure you did them in class 7. You did them in class, like, other classes. So what is determinants? What are they? They are words. The name suggests that they determine something. Okay, they determine something, and what is it? They come before the noun. So they come before the noun. Okay, so they come before nouns and they specify something.
So these are determiners, okay? They are words that come before nouns. Let me say nouns and remove this, okay? So before nouns, they specify something about them, okay? Like quantity, definiteness, and ownership. So these are the three things they specify. Now, these we have like 7 kinds of determiners in English. But and when you see these words, you will say, oh, ye to mujhe aate hain. I know these words because they are some are used as uh, uh, we use as possessive pronouns. Some we use as demonstrative, like uh, uh, adjectives. This, that, these, those, all, which, what. So these are the words, but they are used in a little different manner, and so we call them articles. The simplest one today we are going to do is articles. Okay, so in determiners we have first determiners are articles. Who will tell me which are the articles? Descartes, middle row, first bench. Can you come? Yellow t-shirt. Descartes, middle row, first bench. Yellow t-shirt, come here. Come, tell me which are the articles. Which are the articles? See. Which one? Can you tell me the article? Yeah, kilometer. Which are the articles? Okay. Okay. I want somebody to come here and state which are the articles. Tell us which are articles. Everybody has done them in grade 6, 7. I think so. You started from grade 2. So who will come and tell me what are articles? Okay. Confucius, that boy who's raised his hand on my left. Ajo, come. Please come. Confucius. Yes. Ma'am, A and the. A and the. Okay. So these are the 3 different articles. So you know the articles, we use them as determiners also. Okay, because it tells us the definiteness, specificity. Okay, so specifically, like it will tell us about a thing, like the is used when we point out to specific things. A and R for unspecified. And we know we use A for consonant sounds and for vowel sounds. So please pay attention to the sounds also. Okay, it's not necessary that you blindly do so here we have a PPT and the first one is A and the. Okay, so here we are. Thank you. So everyone, right now, you don't have to look into the sheet. Stop working on the sheet right now. Put that sheet away. I want everybody's attention here. Once whatever we are supposed to do, we finish here, then you will take care of the sheet. Okay, that sheet has to be done by you only, but today, and I'm not going to do the complete thing, okay, with you today, because I want to take it slow so that you never forget it in future. Today, out of 200 students, only 1 student came forward to tell me it is A and the. Probably many of you knew it, but nobody ever stood up to answer. And it is something which you do in junior classes. Descartes, if you both don't stop talking, middle row, first bench, every single question will be directed towards both of you.
Okay? And every single question is going to be directed now also, because when I teach, I want to know how much you have understood. So, we know what it is. It is okay. Is a word that comes before a noun or a noun phrase. This is exactly what I wrote. Okay. Now, everybody has to remember this. It identifies whether the noun or noun phrase is general or specific. Okay. So when we use a and the, we want to know whether it is very general. Like example, I can say an apple. I'm not pointing to any particular apple. I'm just talking about apple in general. Okay. But when I say about a particular apple, okay, the forbidden apple. I don't know if you know the story about Adam and Eve. In that they ate the forbidden apple because it was told to them that in this Garden of Eden you can eat any fruit you want, but you don't have to eat the apple. Okay, but they ate it. So there it is a specific apple. So we can use the forbidden apple. There we will use the. And otherwise, when we talk, because it's a vowel sound, we say an apple. So this is it. So it tells very specific placement of the noun. Okay. Next. Now, my, your, his, her, its, our, your, their. What are these? I'm sure you people know. What are these? Who will tell me? When we don't use nouns, we use these words. What are these? Which noun are these? They are pronouns, okay? And possessive. My, yours, his, her. So these are possessive pronouns. So these are also determiners. They tell you about possession, okay? That whose this particular thing is whose, or whom does it belong, okay? So this is all, they are also determiners. Now let's see the different kinds of determiners. Articles you have already done. Possessives, I just told you the possessives, his, her, this, that, no, sorry, not this, that, his, hers, yours, mine, theirs, all these are possessives. Demonstratives. Okay, now what are demonstratives? What do they demonstrate? They are this, that, these, and those. Okay, they are demonstratives. Okay, quantifiers. They will tell you the quantity. Okay, so many, much, several. They will use, like quantifiers will also use what you call little, less, and they will also use like, how many, like in a group or individually. So that is how they are quantifiers. Few, little, all these are quantifiers. They tell you the quantity. Then we have numbers. Okay, like 1, 2, 3, 4, and we have ordinals. So cardinal numbers 1, 2, 3, 4, and ordinals like first, second, third, fourth. These are ordinals. Then you can write down all these. So here we have the determiner bucket.
Okay, please go through every. I will ask you questions on it. Go through this. Read it. Can you see it clearly? Is it clearly seen by all? I want you to go through it. Now, articles are a and the. Demonstratives are this, that, these, and those. Possessives are my, your, his, her. So very clear. Okay. Quantifiers are much, many, few, little, etc. Like there are many more, several. Numbers, we have cardinals such as 1, 2, and ordinals such as 1, first and second. So the numbers goes on. We can't give you all the examples, so few are here. Interrogative, very, very, very common. Which, what, whose, etc. Okay. So a determiner is a word that introduces a noun. It always comes before a noun or a noun phrase. It provides an identity, specification, or quantity to the noun. Three things. Identity, kiska hai, whose. Specifying it, like whether it is little, more, and quantity. Okay, so three things have been. Okay, yeah, an apple, and here my brother, a few children. So here we have a few this thing. Okay. This year, so these are examples. Just go through it and just make a mind map for this. Just make a mind map for this. I'm going to ask you questions. A lot of questions now. Be ready. Okay. My first question. Who will tell me about articles? What is the role of articles in this, in determiners? What? How do we use articles? Who will tell me? How do we use articles? Nobody? That's surprising. Why do we use a or an? Why do we use the? Why? I just now gave you an example. Like, you know, we have to show something specific, we use the, like apple. I said when we are talking it in general terms, I like to eat an apple. Okay. So and because it has vowel sounds, and all that they have consonant sounds, we make it as a. Okay. When we have to specify, like, you know, we are pointing at a specific thing or something unique or something which exists only in the one, the sun, the moon, they are only one. They exist only one in number. So we give them name, the cities, the countries. So that is very specific. We use the. Now demonstrative. When we have to tell what that is. Okay. We are pointing out at some things. Possessives. When you are using them, like whose thing is this? Whom does it belong to? Quantifiers, how much, quantity. And here the numbers. This is also basically quantifiers only, and interrogatives are like, obviously, we have to ask questions too. So I hope everybody has got this now. Now this is types of articles. Okay, everyone have a look here. Everyone pay attention. So, you know what is an article? And you know there are definite articles and indefinite. The is definite, these two are indefinite, and it tells indefinite is something which is not clear or obvious. Okay, something which is very clear or obvious, we always use exact. We will use the. Okay, everyone? Read this. I want everyone to go through it. Aristotle, why there is movement in the class? Now, see how we have used these articles. Okay? Singular countable nouns. Can you see this? Are you able to see this? If yes, raise your hand.
If you're able to read this, very good, very good. So singular, countable nouns, we use a phone. We know if we say a phone, we know it's one phone, okay? A book, a university. But you will wonder here that why U is a vowel, okay? A, E, I, O, U. U is a vowel. So why are we using a in front of it? There is a reason. Whenever anything which starts with a U, but it has a sound of U, Y, O, O. It doesn't have the sound of a. Then it will have a. Okay, if it has a like universe, the universe, we have one specific. Okay, university, a university. If you're talking about specific university, we'll say the university. But we will not use an here. Okay, but there is another one, honest. Honest, H. H is like, it is a consonant, but the sound, because H is silent, we use the O sound, honest. We don't use H, we don't say honest. So it also has to depend on the sound. This is again, we will do it in the next class, okay? So that the confusion is a young man, a table, etc. How many of you say etc.? It is etc. Okay, E-T-C-E-T-R-A, etc. Use of an. An will become like elephant. R. Now here, H is there. H is a consonant, but the sound is R. O-U-R. H is silent. So we have an. Air. Air. Air means the person who will take over, like, So here, H is silent. Air. Orange, etc. Use of the unique things. The sun. We have only one sun. The moon, the sky, the environment, etc. Singular nouns representing the whole class. The role, the computer, the scientist, etc. So this is how you are going to use this. The tallest, the most interesting thing, etc. Superlative. When it is superlative, we again use the. Then before, names of newspapers, magazines, books, movies, everything. So this is how you will use it. The Newsweek, the Times, etc. Any questions here? Any questions? Or everything is clear? Have you noted down anything? Have you? Okay. So you all have photographic memories, I believe. That the moment you look at something, everything is printed. Good. No questions? No queries? Everybody knows everything? We can move to the next slide. Okay. Possessives. Okay. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay. So this is mine, yours. They are based on personal pronouns. Okay. Yours, hers, its, ours, yours, theirs. Personal pronouns. And here also. My, your, his, her, all these are your possessives. So they are used to show something that belongs to somebody. My car, my. Okay. For relations, my mother is a doctor. 4 parts of the body. He's broken his arm. So 4 parts of the body. So they are used. His arm. So this is how you use possessives. Okay. Let's go to the next one. So we know possessive adjectives are used as determiners.
Okay, very crowded. So demonstrative, show where an object, event, or person is in relation to the speaker. Okay, he's there, he's here. So here, this, that, these, those. Okay, and here we have all the there, here, this, that, these, those. These are your thing. So demonstrative adjectives and pronouns. This, that, these, those, they are mainly, and this car is broken, that car is expensive, these clothes are wet, those birds are flying. Okay, so this is how you do them. This is my chair, this is Peter's house. Like, when you're using possessives also. These are her clothes, those are migrating birds. So this is how you will do those. I hope you can see these, just go through them. This pen is red. These pens are red. I know it is too much to kind of like, absorb on one day. Descartes, the whole class is talking. I request the teacher in charge of Descartes to please take charge. Okay, now you can take out your what you call your worksheet, and you can start doing. We will do only till here today. I think so. It is a lot of information to absorb in one day. The rest we will do in our second class, in the next class. So here you can do these, those. Here you can start with this. You have options here and you can do these. Okay. This was just to introduce you to these demonstratives. So we have done half of them. In the next class, we will do the rest. Okay. So start with your worksheet. It will not take more than 5 minutes. Yes. The first one. Who will answer the first one? Okay. Arabindo, first one. Meg used blank sketch pens to complete her project. Yes. These. Very good. These. Okay. So they are demonstrative. Show where an object, event, or person in relation to the person. Okay. Next. I had blank rice today. Yes. Who will answer this? Okay. Arabindo, first bench. Green t-shirt, come. I had Enough. enough. Yes, enough rice. Very good. Next, third one. Okay, Confucius, first bench. The boy who has the hand, come out. Middle row. Confucius. Blank pictures were painted by Picasso. Blank picture was painted by Picasso. That. Very good. That picture was painted by Picasso. Okay, Confucius. On my left, last benches, there is a boy who has raised his hand. Okay, both of you come. There are two children who have raised their hand. You can both come. One can answer question 4 and one can answer question 5. The book belongs to possessive. Okay. Her. Her. The book belongs to her. Very good. Can you give me The notebook. the notebook? Because very specific. Can you give me the notebook? Yes. Thanks. Next is Sam stood blank in the class. Cardinal. First. Yes. Who will answer this? Name first. First. Okay. Sam stood first in the class. Very good. Arabindo, I can see a few hands raised at the back. Please come forward. The boy, yes, the girl in blue
and many more. I can see a girl on my left in green t-shirt. You can also come. Mavi is blank, honest man. Mave is blank and. Why are we using and? H is a consonant. Why are we using honest as and for this? Okay, because H here is silent. So, and the sound we hear is honest. So that's a vowel sound. That is why we put and here. Okay, like we did in university. U, A, E, I, O, U. U is a vowel, but the sound is U, Y, O, O. That is a consonant sound. So it depends on the sound also. You have to be careful about this. Okay. Blank students were called to the principal's office. Number. Okay. So how many number? Like any student or some student? Okay. Aravindo, first row, red t-shirt. Yes, Aja. The girl in red t-shirt. Ma'am, some. Yes, some students were called to the principal's office. Do you know blank scarf? This is question. So we are asking a question. Anyone from Aristotle? Any volunteers from Aristotle? No? Okay, from Butler? Anyone from Butler who will answer this question? Okay, then first row, the boy sitting in green t-shirt who's, I think so, eating his pencil or pen. Please come. Do you know blank scarf? This is? Ma'am, butter. Ninth one. Do you know blank scarf? This is? Ma'am, who's? Simple question. So you must have understood that determiners are not very difficult. They are very extremely easy. But once we start a little and a little, how they come, and there are like a few and few, then we will have little bit every and each. Okay, then that we'll do in the next class. Okay, next. Then blank Qutub Minar belongs to the Sultanate period in India. Specific building. We are talking about one building. So what are we going to put? Alessandro, middle row, second bench, two girls sitting in a yellow t-shirt. Both of you, one of you can come and answer. Alejandro. You know, it is a Spanish name and they don't have word. They will say Alejandro. S is like Handro. Would you please come? Okay, middle row, two girls sitting in church. Please come. Middle row. It is like anyone else who would like to come? Anyone from Delhi? It's a good impression. Okay. जल्दी आए उन्होंने कौन सा तो भी पनिशमेंट It is the Minar belongs to the Sultanate period. Okay. Blank box of chocolates belong to Rachel. Blank box of chocolates belong to Rachel. We are pointing at something. Okay. Probably that box is lying here. And so we are saying, what will you say? Who will come and tell me? Butler House, anyone ready? Butler House, middle row, yellow t-shirt boy who's talking. Can you come and answer this? Come on, answer this. Yes, I called you. Don't pretend. Blank box of chocolates belongs to Rachel. Ma'am, that. Very good. That. Okay, that. You don't have, I have observed, like, when I talk to all of you, you put lots of
stress on the last syllable. That. Is like that. नहीं बोलना है इनमें. That. Okay, not that. Okay. Is there blank food left in the fridge? Very easy. Yes. Okay. Arabindo, first row, middle row, first bench. She's all eager to answer all the questions. Any. Very good. Is there any food left in the fridge? Okay. Can I get blank Hot bowl of soup. Can I get blank hot bowl of soup? Okay. Arabindo, middle row, last bench. That boy in red. Please come. Can I get blank hot bowl of soup? Like, this could have been the simplest worksheet. The simplest. You will not say, can I get a hot bowl of the sound. Get a hot bowl of soup. Okay. There aren't blank boys in the park. There aren't blank boys in the park. The starters on my right side, first row. Please come. First row. Two boys sitting in red t-shirt. Both the boys sitting in red, yes. One of you come and answer this. Both of you come. Both of you. There aren't blank boys in the park. There aren't blank boys in the park. Come on, any. There aren't any boys in the park. कोई भी लड़का नहीं है park में. Freya got blank beautiful souvenir from Paris. Freya got. There's the other boy who can answer this. Blank beautiful souvenir from Paris. When we go visit a place, we always buy some nice thing that belongs to that particular place. It can be a magnet also, okay, which we usually put on our refrigerator. Or it can be anything like, you will buy a small artifact or something specific about that place that are called souvenirs, okay? So it can be anywhere you travel in India or go abroad, anywhere. Okay, they are souvenirs, or sometimes you bring it small little chit chat to your friends. Freya got blank. Who will answer this? Very easy, simple. A. Don't say A. It's a. Okay. Freya got a beautiful. You don't say Freya got a beautiful souvenir. You will say Freya got a beautiful souvenir for her friend from Paris. Okay, so this is how we have finished this. Today we have finished half of it, and rest we will complete in the next class. Okay, that will be more challenging. That will be more challenging, and the worksheet will be more challenging. So today it was only simple. Everything was very simple. So thank you very much. Have a good day. I hope you enjoyed the class. Though I was not very happy because the response I expected, because I thought it was so simple. Okay. And anyway, next class I'm sure will be much, much better because I know you like challenges, and next class will be very challenging. Okay. Thank you very much. And I hope you have all understood what determiners are. They are basically words which come before the noun. They tell about the specificity of this specificness of this, then this I tell about the quantity and the number and everything. So that is all. Okay. Okay, thank you, children. Have a good day. Have a good day.